Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. One of the most exciting shifts in the smartphone world over the last few years has been the increasing availability of great and mid-range smartphones. Everybody loves a great, sleek, premium quality smartphone, but not everybody can or want to spend so much money. And a lot of people just want a phone for casual gaming, social media or some photography. बट अकॉर्डिंग टू सम पॉपुलर चाइनीज न्यूज सोर्स जो कंपनी स्मार्टफोन लॉन्च करती है प्रीमियम कैटेगरी सेगमेंट पे, उसकी जो ज्यादातर कंपनी जो फोन लॉन्च करती है उसकी प्रीमियम सेगमेंट की सभी फीचर्स मिड रेंज फोन पे और बजट सेगमेंट पे भी देखने को मिलता है। और आज की तारीख पे सभी स्मार्टफोन कंपनी प्रीमियम कैटेगरी स्पेसिफिकेशन लो प्राइस सेगमेंट की स्मार्टफोन पे भी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको काफी कम कीमत पे अच्छा स्पेसिफिकेशन स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। सिंपली पुट, मिड रेंज फोन्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे एंड आर प्रोवाइडिंग बेटर वैल्यूज देन एवर बिफोर। A new report suggests Samsung mid-range फोन पे एक ऐसा फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है जो Samsung की मिड-रेंज फोन पे देखने को नहीं मिलता था, और यह Samsung और बाकी अदर कंपनी की फ्लैगशिप और प्रीमियम कैटेगरी फोन पे ही देखने को मिलता था। इसकी तारीख पे जो भी मिड-रेंज स्मार्टफोन रिलीज होती है उस पे 8GB रैम एंड 256GB तक मैक्सिमम रैम एंड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलता है। बट yesterday Samsung revealed a new RAM chip that will allow the company to include 10GB RAM and maximum 12GB RAM in a mid-range smartphone. The chip is called 24AB LPDDR4X RAM. It uses multi-chip package technology to combine CUFS 3.0 NAND storage and RAM module into a single package. This allows company to use the combo package and break the 8GB RAM barrier in a mid-range phone. मुझे लगता है ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लाएगा यूजर एक्सपीरियंस में, जो लोग मिड रेंज स्मार्टफोन यूज करना चाहता है और जो लोग ज्यादा पैसा देके एक प्रीमियम कैटेगरी स्मार्टफोन परचेस करना नहीं चाहता है। और मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन को और भी फास्ट एंड स्मूथ काम करने में कैपेबल करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।